welcome back to Epilepsy Thursdays. I'm Casey and Accept Epilepsy. So, throughout the month of October, we are going to talk about vacation, traveling, and still living your life with epilepsy. Because many people, what happens is they get scared to travel because they have epilepsy. And they are like, oh my god, what if I experience a seizure while I'm traveling? Or what would happen to me if, I get way too excited or fall or whatever it is. People get scared with the entire idea of traveling if they have epilepsy. And I mean, there are people out there who are so scared that they wouldn't even travel within 10 kilometers, let alone go on a vacation. So the entire month of October, we are dedicating it to how to travel with epilepsy. तो हम अक्टूबर का पूरा महीना इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको एपिलेप्सी है तो भी आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डर सा लगता है कि अगर मुझे कहीं और जाके सीजर आ गए, मिर्गी का दौरा आ गया, तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जिससे लोग डर जाते हैं और उस डर के मारे लोग अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। You don't live your life, you just stay alive if you're scared and going to be afraid of not going anywhere. तो इस डर को मिटाने की मैं कोशिश करने वाली हूँ अक्टूबर का पूरा महीना। So let's begin our video. But before we do that, a big shout out to the sponsors of our month, which are Hobo Indian Lifestyle, and you can check out them on Instagram. Right now I am wearing fisherman pants, Japanese fisherman pants that they do sell, and they make it as well, so it's not as if they are reselling it. They are literally making it and then selling it. Right now I'm just wearing a very plain fisherman pants. Let me just show you. It's going to be so awkward. So it's, I don't know how to show you in an entire line, but it's so comfy. It is like, it's extremely comfortable. And these are not something that I bought out of a store. It's not something that they resell, they buy from somewhere and then they sell it to you. ऐसे नहीं है कि वो एक जगह से कहीं खरीद के वापस उसको दोबारा हमें बेच रहे हैं। ये पैंट्स जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की वो उनके यहाँ जो आर्टिस्ट है, डिजाइनर्स है, उन्होंने खुद बनवाई हैं और फिर वो बेचते हैं। ये वाली काफी सिंपल है, बट उनके पास काफी अलग अलग डिजाइन्स के भी पैंट्स हैं, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे जरूर जाके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए तो कोटेशंस और ये सब उनको आप पूछ सकते हैं। वो है होबो इंडियन लाइफस्टाइल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे उनके इंस्टाग्राम हैंडल लिखा हुआ है। I've written the Instagram handle below in the description box, so you can just check them out. They are Indian, be vocal for local. भारतीय हैं, तो yes, let's go for it. लेकिन सबसे पहले सवाल. Oh, I have to go back for the question. Yes. No. Yes. Astha Singh asked me, क्या epileptic patients IAS बन सकते हैं? First and foremost, I don't know how many times have I repeated it, that people with epilepsy are not patients.
We do not have any illness. We do not have any disease. Epilepsy is a disorder. So it's not epilepsy patient, it's not epileptic patient, it's person or people with epilepsy. So हम ऐसे इंसान हैं जिनको एपिलेप्सी है, हम पेशेंट नहीं हैं, हम मरीज नहीं हैं, क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं है. एपिलेप्सी ये बीमारी नहीं है. So Ms. Singh was asking whether a person with epilepsy can become IAS. Well, if you give your exams, you can. You can become an IAS officer because those are bureaucrats. You are not into, like, there are so many people from the army who have epilepsy as well. So it's not as if that you cannot get into civil services. तो आप सिविल सर्विस में, ब्यूरोक्रेसी में जरूर जा सकते हैं यदि आप अपनी परीक्षा पास करें तो. किसी भी इंसान की तरह आपको आपके एग्जाम्स देने हैं, और यदि आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप IAS ऑफिसर बन भी सकते हैं. So no, like it's not as if a person with epilepsy cannot be a bureaucrat. You can most definitely be almost whatever you want to be. Almost, because there are certain things that we cannot do. So you might be hearing an echo when I'm talking, and you might be hearing a lot of background sounds and the light issue and everything. That is because I'm in my hotel room and there are like some really beautiful birds out there and they are singing. So first and foremost, yes, I'm on a vacation. Secondly, what is this? Well, this is an injury from the mask that I'm wearing. मास्क पहन के मेरे नाक को इंजरी आ गई है, तो मैंने बैंडेड लगा दिया है. तो हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं. But before we head on, a big shout out to Hobo Indian Lifestyle. Instagram handle नीचे है. You can go and check out their products. Or you can just Instagram them, like directly message them and they will answer your queries. Because they are just starting out, नए लोग हैं, अभी just कंपनी शुरू की है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा उनको बढ़ने के लिए. तो यदि आप चाहते हैं कि छोटे बिजनेसेस को आप सपोर्ट करें, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. तो यस, मूविंग ऑन. Today we are going to talk about what all to carry when you are traveling. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ जरूर लेके जानी है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं, तो छुट्टियां मनाने में. 10 किलोमीटर का ट्रैवलिंग नहीं बोल रही हूँ जो जाके आप घर वापस आने वाले हैं. छुट्टियां मनाने के लिए यदि आप बाहर जा रहे हैं, तो क्या क्या अपने साथ लेके जाना है, इसके बारे में मैं आज वीडियो में बात करने वाली हूँ. So first and foremost, medicines. Like, duh, we have to carry our meds, right? So what all do I carry? मैं कौन सी दवाइयाँ कैरी करती हूँ. दवाइयाँ तो कैरी करनी ही है हमें भाई, वेकेशन के लिए जा रहे हैं. इसका मतलब ये तो नहीं कि दवाइयाँ आप घर छोड़ के बाहर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता. तो मेरी जो हमेशा वाली दवाइयाँ हैं वो तो मतलब कैरी करनी ही है. इसके साथ साथ मैं अपनी जो SOS दवाई है, इमरजेंसी वाली जो दवाई है,
वो भी मैं अपने साथ रखती हूँ. So I carry my normal meds, which like my cocktail of meds right now that I'm on. Plus I also carry my emergency tablets, my SOS tablets, just in case if I start feeling an aura, I can just pop it. You should always be careful. It's better to be careful rather than being sorry, right? So I carry that. और सिर्फ उतनी ही दवाइयाँ नहीं कि भाई अगर हम 5 दिन जा रहे हैं, यदि आपने प्लानिंग ऐसी की है अपनी वेकेशन की कि हम 5 दिन जाके घूम के वापस आने वाले हैं, अगर ऐसी प्लानिंग की है तो 5 दिन की प्लानिंग है तो 10 दिनों की दवाइयाँ लेके जाइए. That's what I would suggest, that if you already have an itinerary and if you have your vacation is planned, like all the days are planned, like you're going somewhere for 5 days, then I would suggest that you carry medicines that would last you for 10 days. Now me, I always tell people that carry extra medicines. Like for example, I am on an unplanned trip, backpacking. So I am can you see how much medicines I'm carrying? That is because, that is because I don't know when I'll be going back home. So I am carrying more medicines than required. क्योंकि मैं बैकपैकिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं घर वापस कब जाऊंगी, तो मैंने महीने भर की दवाइयाँ कैरी की हैं. आई एम कैरिंग 1 month worth medicines so that I can at least be out for a month, vacationing, roaming around, exploring, and so it's always good. As I said, if you have a planned vacation, then carrying medicines is easier. If you have an unplanned vacation like me, then carry extra meds, like a ton of medicines, and it's mandatory. So yeah, do that. अगर यदि आप मेरे जैसे ही ट्रैवल करते हो कि भाई हमें नहीं पता हम घर कब जाने वाले हैं वापस, और हमने महीने भर की तो दवाइयाँ अपने साथ लेके रखी हुई है, पर शायद हम और दिन ज़्यादा ट्रैवल करें, तो हमें नहीं पता हम कितने दिन ट्रैवल करने वाले. यदि ऐसी चीज़ है तो दवाइयाँ अगर ख़त्म होने आई हो तो अपने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप द्वारा अपने पास मतलब मंगाइए. उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि कृपया हमें व्हाट्सएप करके एक प्रिस्क्रिप्शन भेजिए. एंड और मेडिकल के पास जाके अपनी दवाइयाँ वापस खरीदिए. कोई भी मेडिकल के, मतलब जिस मेडिकल में वो दवाइयाँ अवेलेबल हो, बड़ा वाला मेडिकल हो या कोई अस्पताल मिले आपको नजर आए, तो वहां से अपनी दवाइयाँ जरूर खरीदिए. So as I said, if you're like traveling like me, which is like an unplanned thing that I do, I don't plan my vacations, and if you're a traveler like me who just goes with the flow, then the moment your medical stock starts replenishing, you realize that okay, I'm going out of my medicines, like running out of the amount of medicines that I had, then request your doctor to send you a prescription on WhatsApp or a photo of it, so that rather than prescription, a photo of the prescription, so that you can go to any pharmacy and restock your medicines. So always make sure that you are in touch with your medical personnel, your health personnel,
who will give you a prescription at the last moment. तो अपने डॉक्टर के साथ हमेशा इन टच रहिए जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दवाइयाँ लिख के उसका फोटो निकाल के आपको भेज सकते हैं. तो yes, that is a must. Please stay in touch with your doctor. Before we head on, a big shout out to Hobo Indian Lifestyle, who have sponsored the month of October, and I'm wearing their Japanese fisherman pants, which they have made it themselves and given me to travel. So yes, that is something, because it's extremely comfortable. The pajamas, they are like extremely comfortable, though they are not the technically, as I said, Japanese fisherman pants. So they originated in Japan, but they have traveled to India now as well, and they are the best thing ever. They are so comfortable, they are unisex, and so man, woman, anyone can wear them. They are freestyle, so it's not as if like you cannot share. If you're traveling with someone and don't want an extra luggage with you, you can share clothes and you can share these pants, because they are unisexual. Anyone can wear them, regardless of their height, regardless of their size, and regardless of their gender. तो height, size, आप स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पैंट्स कोई भी पहन सकता है. ऐसी पैंट्स है ये. मैं हाइट में इतनी सी हूँ और मैं इतनी पतली हूँ, फिर भी मुझे ये पैंट्स होते हैं, क्योंकि इसकी टेक्निक है पहनने की, जो मैं बाद में आपको बताऊंगी. Moving on, what else should you carry, which is extremely important, because you have epilepsy. Not because you're just traveling, but because you have epilepsy. And yes, these videos are going to be, I think, not as pleasant to look at as compared to other videos, because I'm just using the tube light and everything of the hotel and not the normal tripod and camera and everything that I use. So yeah, the next thing that you should carry with you are socks. Socks आपको जरूर कैरी करने हैं अपने साथ. If you're wearing shoes, तो वो वाले socks तो अलग होते ही हैं. I mean, those are different socks, but these are like, you know, heavy duty woolen socks, which are like really thick, and I always carry them because my feet really get cold, and once you have cold feet, you are bound to you know, your seizure trigger. If it's cold, then you might get triggered and you might end up experiencing a seizure. So why would you want to, like, you know, invite a seizure per se? Yeah. So which is exactly why I always carry socks with me, so that I can just wear them and sleep and avoid nocturnal seizures. Yes. सॉक्स अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ठंडी से सीजर आ सकती है. जो मुझे ठंडी एक मेरा ट्रिगर है, तो मैं हमेशा ये सॉक्स, ये मोटे वाले सॉक्स कैरी करती हूँ. पतले वाले तो शूज के लिए होते ही हैं, लेकिन ये मोटे वाले सॉक्स भी कैरी करती हूँ, क्योंकि हमें नींद में सीजर नहीं चाहिए. तो बेहतर है कि आप सॉक्स पहन के सो जाएं.
और आबेल मुझे मार ना करे. Now, along with the socks, what else to carry? Oh my god, we are already 20 minutes into the video. Yeah. What else to carry along with socks? Depending on the weather and which place you are going, carry a sweater with you. Now I'm not going to reveal where I am, but you can check out my Instagram or Facebook stories to know where I am, like my other social media platforms, but I usually don't share where I am. So yeah, but I'm at a place which is not extremely cold, but since it's October and since I am in India, October heat is something which is there. I mean, India is famous for its October heat, but at the same time it gets slightly colder in the evening over here, the places that I'm traveling. So I'm carrying a very light sweater, an extremely light sweater, sort of a shrug sort of a thing, क्योंकि मैं ऐसी जगह में घूम रही हूँ जहाँ पे अक्टूबर हीट, मतलब पूरा दिन गर्मी से तपतपा रहे हैं, लेकिन शाम होते ही हल्की सी हवा शुरू हो जाती है, ठंडी थोड़ी सी लगती है. तो इसलिए मैं मोटा वाला स्वेटर नहीं, एकदम ये देखिए ना, काफी पतला है, मेरा हाथ भी नजर आ रहा है, ऐसा पतला वाला स्वेटर लेके मैं घूम रही हूँ, क्योंकि ज्यादा ठंडी नहीं लग रही यहाँ पे, लेकिन हल्का सा ठंडा लगता है. तो ऐसे पतले वाला स्वेटर हमेशा अपने साथ रखिए, सॉक्स की तरह ही, क्योंकि हमें सीजर को मेहमान की तरह बुलाना नहीं है. We really do not want to invite a seizure as a guest. So yes. What I also carry with me is a scarf, which is again, as you can see, very very light. You can see my hand through it. It's almost transparent. मैं ये पतला वाला scarf क्यों carry कर रही हूँ? Same reason. There are places where you don't, or the clothes that you're wearing, like you don't want to carry a sweater, but you want something to wrap around you, then this is the best thing to do, right? अगर आपको स्वेटर नहीं कैरी करना है तो ये ऐसे वाले स्कार्फ कैरी करना ज्यादा आसान है. Plus, also because I'm traveling to places where which are sacred, like temples and places like that. So scarf comes handy because there are places where you have to, like, you know, like just cover your head at times at some place. So a scarf comes kind of handy when you have to, like, you know, just cover your head, or else you don't get entry. Because it's sacred, it's holy. मैं ऐसी जगहों पे ट्रैवल कर रही हूँ जहाँ पे कोई चीजें ऐसी हैं कि वो पावन है. तो दरगाह में जा रहे हो या फिर कोई मंदिर में जा रहे हो या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कोई रूल्स होते हैं कि हमेशा आप स्वेटर तो सर पे नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे स्कार्फ अगर आपके पास है तो आप फटाक से ये सर को ढक सकते हैं, है ना? क्योंकि हम औरतें हैं. मैं ऑब्वियसली औरत के नजरिए से बात कर रही हूँ फिलहाल. मर्द हो तो आपके पास हैंकरचिफ तो होता ही है भाई, निकाला रुमाल ढक दिया हो जाता है. औरतें तो रुमाल से नहीं ढक सकती, तो इसलिए मैं स्कार्फ की बात कर रही हूँ. तो ऐसा एक पतला सा स्कार्फ अच्छा होता है, क्योंकि जिस जगहों पे आपको पता नहीं आप कहाँ पे जा रहे हो, मतलब आपको अगर पता है आप कहाँ पे जा रहे हो तो बात अलग है. मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पे घूम रही हूँ. सो ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ. If you already know where you're going and where you're headed to, then you need not carry a scarf, or if it's mandatory then you know that you need to carry it. But
I have no idea what my next destination is going to be. So which is exactly why I always carry such scarves, because I don't know which is the next place that I'll be visiting. So it's always it's always better to be respectful towards other religions, other faiths when you are traveling to their places. Uh, Even if it's a village, there is a dress code, and you cannot wear your normal clothes everywhere, right? And it's not because of women's safety. I'm not talking from oh, I'm a woman and I should be safe, then sorry because I'll get these questionable looks. I'm not talking from that point of view. I'm talking from a point of view where you have to respect the other people's culture and other people's way of life. हर एक इंसान की एक तरह से जीने की स्टाइल होती है. तो हर जगह आप अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते. मतलब आप पहन सकते हैं अगर आप चाहो तो, पर मैं ऐसे नहीं करती खुद, क्योंकि मुझे उनका दूसरों रिस्पेक्ट के तौर से मैं ऐसे नहीं करती. तो इसीलिए हमेशा there is one more thing that I always carry, and we are going to wrap up this video and continue with part 2 of what all to carry for next Thursday. So और एक चीज जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ वो है मोटी वाली शॉल. I always carry an extremely thick shawl. This is like extremely thick. I always carry a thick shawl as well. अब ये क्यों कैरी करनी है भाई? क्योंकि हर होटल में या हर जहाँ पे भी आप रह रहे हो, भले वो हॉस्टल हो या डॉर्मेटरी सिस्टम हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, हर जगह पे मोटी चद्दर नहीं दी जाती. कभी कभार चद्दर उतनी मोटी नहीं होती जितनी आपको चाहिए. तो अच्छी बात है कि आप वो डबल कर सकते हैं, और वो कभी कभी आप अगर और एक चद्दर मांगो तो वो कभी कभी देते भी नहीं है कई होटल में. तो अच्छी बात है कि आप अपनी मोटी वाली शॉल और उनकी चद्दर, ऐसे 2 चद्दरें लेके सो जा सकते हैं. So I always carry a really thick shawl with me because I'm a person who backpacks and travels solo, and there are places wherein, like, some hotels, or sometimes I have to stay in a hostel, or like, there are dormitories wherein the sheet that has been provided to you might end up being thin for you, and you might feel cold. So, and if you ask for another sheet, they might refuse. They might not provide you. So it's always better to carry a thick shawl with you so that you can double it up with the sheet that they have provided you, so that you don't feel cold. As simple as that. So that is all for today. Before we wrap up, a big shout out to Hobo Indian Lifestyle, who have provided me with the Japanese fisherman pants that I'm wearing right now. And they don't resell anything. They create it themselves and then they sell it. वो लोग एक जगह से खरीद के दूसरी जगह नहीं बेचते, वो खुद चीजें बनाते हैं और फिर बेचते हैं. You can check them out on Instagram. I am adding their Instagram handle in the description box. They are new.
they are an upcoming business. So you can directly message them on Instagram asking them what all they can serve you with or provide you, or what all do you wish to buy from them. So yeah, support small businesses. It's the need of an hour, need of the hour. And hashtag be vocal for local. They are Indians, they are our own. So do that. And oh yes, no, but I'll cover it in the next video. That is what all to carry when you're traveling, part 2. This was part 1, and till next Thursday, stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.